नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं तुषार गुप्ता जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू शो। Thank you for having me. हैज मतलब बोलते हैं ना, बड़ी क्रेजी इलेक्शन साइकिल वी जस्ट गॉन थ्रू। अभी तो शुरुआत है, देयर इज बिग वन कमिंग इन। बट व्हाट डू यू थिंक यार, अपसेट्स और एक्सपेक्टेड? This was an exhaustive election season. I mean, it felt like another Lok Sabha session going on, a Lok Sabha election season going on, but it was quite exhaustive. For the BJP, at the beginning of the year, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ खास होगा नहीं इस साल. बंगाल में श्योर होगा, पर ममता बनर्जी will always have an edge with the whole minority consolidation she gets. तमिलनाडु में कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि डीएमके एडीएम के अलावा एक और फैक्टर पैदा हो जाएगा. Puducherry, Assam, let's be very clear, everyone knew and not much of us cared also because Assam, Hemanta's territory, Bengal में जो हुआ वो exceptional है. मतलब भाई, I would rate it as highly as 2014 and 2019 victory. लोग कह रहे हैं कि यूपी 2017 के बराबर है. नहीं, ये 2014 मई के बराबर है when Modi was sworn in as the prime minister for the first time. This is a cultural, a civilizational shift. लाइक इमेजिन अ स्टेट. अभी क्या होता है ना, हम हर स्टेट में जब इलेक्शन एनालाइज करते हैं, बिहार में करते हैं, यूपी में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, अपन करते हैं कि 70-80% हिंदू वोट, 20% माइनॉरिटी वोट. यहाँ पर क्या है, 40-45% हिंदू वोट, 40-45% मुस्लिम वोट. दिस इज अ स्टेट विद टू पोलराइज्ड मेजोरिटीज. अभी प्रॉब्लम अब तक क्या था कि एक मेजोरिटी ममता बनर्जी को लॉक स्टॉक बैरल बैक करती थी, दूसरी मेजोरिटी थी अपनी कंफ्यूज्ड कि कम्युनिस्ट भी हमें बनना है, बंगाली आइडेंटिटी का झगड़ा भी हमें करना है, कौन बंगाली है कौन आउटसाइड है वो भी हमें डिफाइन करना है. हिंदूज इन बंगाल वर लॉस्ट इन ऑल दिस discussion for the longest period of time. This time, they were like, boss, enough. We are rallying behind the BJP because for us, it's not a development issue. It's not a political issue. It's not a policy issue. It's an existential issue. कि भाई अगर आज भी चुप रह लिए तो आगे क्या होगा हमारे स्टेट का हमें नहीं पता. रूरल बंगाल में एक वो प्रॉब्लम थी कि भाई टीएमसी के लोगों ने अलग आतंक मचा रखा था, हफ्ता वसूली, कैसे जो वेलफेयर स्कीम्स जो स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी किनको मिलेगी. अगर आप पार्टी के हो तो आपकी चांदी है, अगर आप पार्टी के नहीं हो तो आपका कुछ नहीं है. और फिर अर्बन एरियाज में ये होने लगा था, वाई हावड़ा हुगली कोलकाता टर्न वाज बिकॉज पीपल अराउंड देम वर सीइंग दैट दिस इज अ सिटी वी नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज. अपन को क्या लगता है, कलकत्ता मतलब हावड़ा ब्रिज, गुड म्यूजिक, गुड कल्चर, वो सब है. बट द पीपल देयर वर स्टार्टिंग टू सी इट कम अंडर द शैडो ऑफ अ वेरी डिफरेंट, वेरी डिस्टिंक्ट कल्चर. एंड दैट इज वेयर इट बिकेम एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. जिस तरह की वहां गुंडागर्दी हो रही थी, आरजी कौर केस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द वोटर्स. लड़कियां आके कैमरा पे बोल रही हैं कि भैया हमारा कल को रेप हो जाएगा तो हमें 10 लाख रुपए देगा मुख्यमंत्री. That is what our value is. That is how you've quantified our dignity. So, a lot of things that Mamata Banerjee did wrong, they just culminated into this election campaign. But the majority, the biggest factor was an existential crisis. लोगों ने देखा बांग्लादेश के इलेक्शन में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ. दैट घर पे घुस के शेख हसीना के जो पूरा वो चला था, एक आसनिंग और पूरा एक वर्कआउट हुआ था. फिर यू हैव जमाते इस्लामी लिटरली ऑन ऑल दोस डिस्ट्रिक्ट्स bordering India in western Bangladesh. So a lot of these factors were weighing on the mind of the people, and BJP was always the clear alternate. I don't know why people were so surprised that BJP has suddenly made a lot of progress. 2024 May, it may have had a very terrible national campaign, a terrible national campaign even with 240 seats. But they bloody increased their vote share in 173 of the 294 assembly seats in Bengal. That is how efficient the performance was. बंगाल में इन्होंने सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाए, 18 की 12 हो गई, ठीक है, बट दे रिटेन देयर वोट शेयर एंड एक्चुअली इंक्रीज्ड इट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. भवानीपुर अभी सब देख रहे थे, जैसे वन लास्ट पॉइंट, 22 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस था भाई 2021 में. 22. एक नॉर्मल इलेक्शन में दैट्स एन अनवर्केबल गैप. 2024 तक वो गैप 6 परसेंटेज पॉइंट का रह गया था. एंड कम 2026 दे फ्लिप दैट इलेक्शन. तो भाई ये जो बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है ना वेस्ट बंगाल का, कि हमारा जो क्लास 1 और 2 का रिपोर्ट कार्ड होता था कि भाई सब में A+ है, ऑल द राइट बॉक्सेस टिक्ड, दैट इज हाउ इट हैज वर्कड आउट फॉर द बीजेपी. इट्स जस्ट फिनोमिनल.
मेरे को एक चीज बताओ, द मुस्लिम वोट बैंक, ठीक है, Hmm. एंड लॉट ऑफ पीपल वर लाइक यार मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। यार दे ब्रोकन इट यार। आप जो They भी कह लो, broke it. Hmm. टेढ़े मेढ़े काम करे, जो भी करा, एक वो हुमायूं कबीर आ गया, AIMIM वहां पर घुस गया, ये घुस गया, वो तो टूट गया यार, वोट बैंक इज ब्रोकन। यार एक बात तो, जो बीजेपी का वोट बैंक टूटा है, there's an echo, I think. एक मिनट, now you can hear me? हाँ, I'll resume. यार जो मुस्लिम वोट बैंक टूटा है ना, उसमें आई वुड एट्रीब्यूट मोर टू द पॉलिटिक्स ऑफ ममता बनर्जी दैन द इंजीनियरिंग ऑफ द बीजेपी। बीजेपी को तो अभी भी मुस्लिम वोट नहीं मिला। एक चाणक्य का शायद सर्वे था, वो कह रहे थे कि भैया इनको 14 लाख मुसलमान लोगों ने वोट किया है। आई लुक्ड अपॉन 90 सीट्स विच हैव अ मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30%। ऑफ दोस 90, 100 सीट्स, लेट्स टेक इट, 70 odd was still won by ममता बनर्जी। बाकी 27 सीटें जो बीजेपी जीती, उसमें क्या हो रहा था, जो मुसलमान वोट है वो नॉन बीजेपी पार्टीज में बट रहा था। तो दे वर नॉट गोइंग टू द टीएमसी, दे वर गोइंग टू द कांग्रेस, टू द सीपीआई और टू अदर रीजनल पार्टी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बेलडांगा का। दिस वाज अ मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ 63% असेंबली। दिस इज दैट बिग इन असेंबली। बीजेपी का यार 2026 में वोट शेयर 31% है। अब आप कितनी बार सोचते हो कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट में 31% पे आप एक इलेक्शन जीत रहे हो, एक असेंबली इलेक्शन जीत रहे हो। बट हुआ क्या, टीएमसी को मिला यहाँ 26%, 26% वोट शेयर। INC took away 17%. So INC plus TMC was anyway much greater than the BJP. But एक और छोटी पार्टी थी, आम जनता उन्नयन पार्टी, AGUP, that took away another 20% vote share. So 20 plus 17 plus 26, approximately 63% vote share was broken between 3 different party units. और उस असेंबली की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 63%। तो बाकी नोटा वगैरह तो कुछ खास नहीं लेकर गए, बट बीजेपी को बस जो हिंदू वोट मिला वही मिला। अब वो मुसलमान वोट कट गया, बट गया, वो बीजेपी की किस्मत भाई। ठीक है, आ गया आ गया। बट यू लुक एट ऑल द सीट्स विच आर वन बाय द बीजेपी विद द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30%, इट वाज जस्ट द मुस्लिम वोट ब्रेकिंग अप विद इन नॉन बीजेपी पार्टीज। दे वर वेरी क्लियर, वी आर एंग्री विद ममता बनर्जी, but even then we won't go to the BJP, we'll go to some other alternative. And because that uh, conversion from Mamta vote to Congress vote was not very coherent, was not very smooth, was not very planned, the BJP gained in at least 27 seats. यही मैंने अपने सबस्टैक पे सबसे पहले ब्रेक किया था कि भैया तुम ये इस चक्कर में मत पड़ो कि हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, और हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हुआ है पर कहीं एक सेकुलर मैंडेट है। क्योंकि ये चीज होती है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये थोड़ा ना रहता है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ हिंदू मैंडेट, दिस इज अ सेकुलर मैंडेट। डोंट फॉल दैट फॉर दैट ट्रैप। Mamata Banerjee enjoyed a minority mandate. BJP today enjoys a mandate that can be attributed clearly to Hindu consolidation. And वो 27 सीटों का एनालिसिस मैंने डाला हुआ, एक भी सीट में there is no evidence that Muslims voted for the BJP. क्योंकि नाउ लेट्स कम टू ये बड़ा अपने, आई थिंक यू गिवन अ वेरी 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 गुड ब्रेकअप। मेरे को एक 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 पॉइंट पे आना है, विच इज आईपैक, राइट? Hmm. आईपैक का जो गेम हुआ वहां पर, एंड वन थिंग दैट वी सॉ इज द बीजेपी वेंट फॉर इट. People didn't really Hmm. understand it. I have not really been able to understand it, but two three things I'll mention. आपके बाद you can kind of connect the dots after that and help me out understand this. सबसे पहले IPAC was hit in Bengal, ठीक है, उसका पूरा, and the way Mamata Banerjee ran to this thing, that was very curious to me. I said यार ये क्यों भाग रही है इतना? It's just a this thing that is doing your प्रचार. Fair enough, तुमने भागा, तुमने ये सब करा. IPAC literally went out of the business. Mamata Banerjee says मैं नहीं काम कर सकती. 2 days later, समाजवादी पार्टी in UP comes out and says हमारे पास भी पैसे नहीं है. IPAC goes out. Akhilesh Yadav runs to Mamata, and the only leader that actually runs to Mamata Banerjee to meet her and all that. आप हारे नहीं, आप ये वो and all that. Somewhere down the line, मेरे को कुछ I see something fishy. Was she the financial node of IPAC? जहां पर she was creating a opposition structure. क्योंकि आप वो रिजू दत्ता है ना, उसका एक वीडियो है, ठीक है, आज तो उसके ऊपर हालत खराब कर रखी है उसकी.
बट रिजू दत्ता का एक वीडियो है वेयर ऑन द 4th of May उसने बोला था, ममता बनर्जी विल इमर्ज एज द leader of the India Alliance and we will reinvigorate the entire thing. There is no other leader who's as powerful as Mamta Banerjee now. Modi will get a direct challenge. ये वो. That was very curious to me. So what she saying कि भैया मैं अपना वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर आईपैक से जीतूंगी, अखिलेश भाई डोंट वरी, मैं आपको भी यहाँ से फाइनेंस कराऊंगी, आईपैक विल दिस थिंग, because it's very this IPAC का role somehow I am not able to picture it together. And the way politics has opened up, जिस तरह से कहीं casteist ये वो बहुत चीजें जो हुई हैं, it's curious. What do you think? Bhai, there are sometimes political parties running such consulting agencies, and sometimes consulting agencies running a political party. In case of TMC, at one point it was literally IPAC running the TMC. Booth management कैसा होगा, assembly level planning कैसी होगी, कहाँ कितने पैसे distribute होंगे, कैसे होंगे, outreach कैसा होगा. Everything was being done by IPAC even before the Sorry, I'll add, आपने जो बोला है, Kalyan Banerjee also comes out and says IPAC destroyed TMC. They were blackmailing many in the TMC. And they captured Bengal government machinery, including the police. So that is what I'm saying. Was IPAC running the TMC or was TMC consulting with IPAC, right? This is where it really becomes a fishy affair. Dusri cheese, when IPAC was raided for charges very different to the West Bengal election consultancy, Mamta Banerjee saw it as a threat because she was overly dependent on IPAC. At the end of the day, a consulting agency can only get you so far. We can today say that was IPAC responsible for Mamta Banerjee's defeat? No. Probably it would have made a difference in 20, 30, 40 seats if you want to be that optimistic. But 200 सीट पर आप एक कंसल्टिंग एजेंसी के हैंडकफ होने से नहीं हारते. आपका कल्याण बैनर्जी कह रहे who was still singing with Mamta Banerjee that IPAC has ruined us and it was blackmailing TMC members. First, the mandate came from the TMC leadership, na? It came from Mamta Banerjee, it came from Abhishek Banerjee. It wasn't that IPAC was running a voluntary affair. दूसरी चीज, ये जो एक कीड़ा है कि ममता बनर्जी कैन बी द लीडर ऑफ इंडिया अलायंस, भाई ये 2021 से चल रहा है. 2021 में भी at one point this notion came up after she won Bengal that she is now the rightful leader of the India Alliance. She should progress to Delhi because everyone thought that like Narendra Modi had his 2012 moment in Gujarat, Mamta Banerjee will have it in 2021. After Bengal, she'll elevate to herself to a national stature and probably run the India Alliance. The problem with that is Mamta Banerjee experimented with that idea in 2022 when she campaigned in Goa, when she campaigned in the Northeast also. Outside Bengal, Mamta Banerjee was rejected every single state. So वो experiment भी fail हो गया. Then that entire charter died out. Then Nitish Kumar took over after Karnataka elections in 23. फिर एक India Alliance बनी. करते कराते ये चीज पहले हो चुकी है. Problem अब ये है, what does Mamta Banerjee really have? A leader who couldn't save even her own assembly. उसको कौन नेशनल अलायंस का पार्टनर बनाएगा? उस पार्टी का रेलेवेंस स्टेट के बाहर कहीं नहीं. अभी प्रॉब्लम क्या हो गया इंडिया अलायंस के लिए? टीएमसी डीएमके हार गए हैं, आरजेडी हार गई है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार चुकी है, पंजाब में उनका पता नहीं है, प्लस दे आर नॉट अ बिग कंटेंडर. एंड गोइंग बाय द म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस इन गुजरात, वी वेरी वेल नो वेयर आम आदमी पार्टी स्टैंड्स विद ऑल दैट नॉइज. Which is the regional party left that can actually aid the Congress in its national ambitions? समाजवादी पार्टी, उसका भी अगले साल पता लग जाएगा कितने पानी में है. So what is really left with the Congress now? What is really left with the India Alliance? And ये जो एक लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी could have led it, let me be very honest with you, Congress would have never accepted it. For the Congress, the regional parties have two utilities. एक, कि let us latch on you and secure our vote bank or increase our minority vote bank. Or two, if you are defeated, let us then reclaim our national spot कि भैया nationally तो हम ही है, रीजनल पार्टी तो देखो अपने गढ़ में भी नहीं जीत पा रहे. तभी इन्होंने डीएमके को एक सेकंड में छोड़ दिया और विजय के साथ जाके चिपक गए. कांग्रेस को कोई मैंडेट नहीं है लोगों का तमिलनाडु में. आज ये राहुल गांधी के लोग वो निकाल रहे हैं कि ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार विद विजय. He has 5 seats in the state. 5 in an assembly of 237, 236 seats. He never had the mandate, but this is the Congress strategy. If one regional partner cannot serve their purpose, they move on to the next. और टीवीके के साथ ये क्यों जुड़े? 39 seats in Tamil Nadu. 39.
Lok Sabha 2029. That is what's going on their mind. टीवीके से ये लोग जुड़े तो हैं. नाउ टीवीके इज वेरी इंटरेस्टिंग. टीवीके की एक तो बाय द वे फनी थिंग इज द आई मीन देयर आर लॉट ऑफ उसके ऊपर एलिगेशंस कि भाई ये क्रिश्चियन ये वो चर्च का बैकिंग एंड व्हिच इज बीइंग सीन. है ठीक है. यहां पर इनकी एक एमएलए है शिवकाशी. टीवीके शिवकाशी है जो उसका नाम. शी इज गिवन 2-3 स्टेटमेंट्स जो बड़े इंटरेस्टिंग है. इसने बाय द वे इसने और सम अदर पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इन हिंदी. तो लैंग्वेज वाला गेम वहां गया. इसने एक स्टेटमेंट दिया है अबाउट गैस सिलेंडर्स. ठीक है. कहती है डोंट अक्यूज मोदी जी फॉर गैस सिलेंडर्स यार. women were cooking with wooden logs before him. Now everything is changed. The LPG shortage because of war. So let's not play politics over reality. यार टीवी के अपना विजय का क्या एजेंडा है वो मुझे नहीं पता. इसकी पार्टी के अंदर कुछ जो बंदे हैं वो थोड़े बहुत you can see some sanity in them. I don't know. It may be an early assessment. What do you think? गिव इट सम टाइम, बिकॉज जब भी कोई पार्टी सोशल जस्टिस, इक्विटी, इन सब की बातें करने लग जाती है ना, मेरे को थोड़ा वो स्केप्टिकल हो जाता हूँ मैं. इवन व्हेन द बीजेपी गॉट इनटू दिस होल यूजीसी बिजनेस की we want to ensure equity, some social equity and all that. I was like, look, the state has no business getting into the business of equity. You cannot enforce equity or equality within a society. Your job is to create equity and opportunity, not an outcome. So let's be very clear about that. अब प्रॉब्लम यही है, आदमी कह रहे सोशल जस्टिस. इसके पहले 3 ऑर्डर्स हैं: विमेन टास्क फोर्स, ड्रग के लिए एक टास्क फोर्स, एंड 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी. ऑल दैट इज फाइन, दैट इज रिक्वायर्ड. व्हेन ही से सोशल जस्टिस, वेयर डज ही ड्रॉ द लाइन? अब इसके मैनिफेस्टो में तो ये भी लिखा है कि हर एक ब्राइड को 8 ग्राम सोना मिलेगा, विच इज लाइक 1.5 लाख almost, right? A silk sari and all that. My worry is the way his manifesto is designed, and that is our only reference material right now. He will go to war with the center at some point for funds. He will do what Siddaramaiah, Vijayan, and Revant Reddy were doing about the whole North-South devolution divide. कि हम नॉर्थ का पैसा क्यों दे? क्योंकि अब इस देश में एक पॉलिटिकल नॉर्थ साउथ डिवाइड तो आ गया कि पूरा हिंदी बेल्ट, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया सब बीजेपी है, मोर और लेस. Southern India, it's either the Congress or an opposition party, except Andhra Pradesh. So that is where my worry is, that he shouldn't. We have just rescued one state from the clutches of the communists and the radicals, that is West Bengal. I do not want Tamil Nadu to lose its industrial prowess, because beyond all their love for movies and, whatever cinematic obsession they have, it's still a very powerful industrial state. It will be one of our first $1 trillion states. तो वो चीज डीरेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा जो बैड फीलिंग है, एंड आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, इज विजय फर्स्ट agreement or disagreement with the center would be on labor reforms. ये जो फिल्मी पॉलिटिशियंस होते हैं, तुम 80s से कोई भी मूवी उठा लो, 80s, 90s, 100s, अमिताभ बच्चन की उठा लो, आई रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, द वर्किंग क्लास. अब वो तो लेबर ही हुआ, आईटी वालों को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं भाई साहब. एंड तमिलनाडु में आईटी इतना कुछ बड़ा नहीं हो, तो सारा बैंगलोर और हैदराबाद में. So my worry is it shouldn't sort of come for the labor reforms and then for the manufacturing. But again, it's still very, very early days. मतलब आज तो नामकरण हुआ है, अभी 3-4 महीने देखो, पता चलेगा. Also, विजय को, वही मैं कल से एक ही चीज बोल रहा हूँ, इसको ट्रॉय मूवी देखनी चाहिए. He essentially has DMK's Trojan horses in his government. TVK, VCK, CPI, Congress, all of these were allies of the DMK. What if they flip tomorrow? Can you believe that IUML, a radical Muslim political league, communist, a batshit mentally retarded economically league of politicians, and then the Congress will dictate terms to Vijay, who's a novice politically and from a policy perspective. अगर इसको ये लोग कहेंगे, I mean, communists will further the agenda of social justice. IUML will further the agenda of social justice from a filter of religion. Congress will filter जितनी आबादी उतना हक. Where does it leave Tamil Nadu? That is where the danger point is. Today इनके जो वहां पर, although he was not supposed to give a speech, but 2-4 statement दे दिए.
he said कि भाई I am the only power center. Now to me that was very interesting. जो आप बोल रहे हो उसके साथ अगर आप connect करो तो that means there are certain demands coming out at the back. पीछे से बोला जा रहा है कि भैया अच्छा you need to give this to us, you need to give this to us, you need to give this to us. ये सब चीजें हो गई हैं. As far as industrialization is concerned, एक चीज बताऊं, the DMK lasted this long because of the fact कि भाई वहां की इकोनॉमी अच्छी चलती थी. बट पिछले 3-4 साल में जो चीजें हुई हैं वहां पर इन तमिलनाडु, their economy is now going down. ठीक है, there is a crisis in Tamil Nadu. Jobs and this and that is becoming a problem. And how that was covered was इधर पे थोड़े पैसे बढ़ा दो, उधर पे थोड़े पैसे बढ़ा दो, which is happening all over South India, by the way. कि आपका जो by the way, do you know कर्नाटका में अगर आपके घर में बिजली है, अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो your bill is almost $200-300 minimum. If you not even खाली घर में, right, your property tax prices have gone up, everything has gone up. तो ये लोग भी उधर उधर करके they've been kind of managing this. इसके पास वो स्पेस नहीं रहेगी because it's at a very crux point. So what you're saying is clash होगा, वो तो है, but how do you think he'll be able to manage this so-called coalition? कितना टाइम चलेगा ये? I don't see it lasting long. You never see such governments lasting long. It never lasted in Maharashtra, Karnataka, Delhi, Bihar, to cite examples from the last decade only. So I don't know ये कितना लंबा चलेगा, but anyway, if even the alliance partners pull out, Vijay will emerge as a hero. That is why some of us were of the opinion that if he was not getting a coalition, he could have simply offered the other party to form the government, because even that government wouldn't have lasted, and then he would have come back with a thumping mandate. But why, everyone wants power today rather than tomorrow. So Vijay right now, even if the alliance falls apart, will be the victim unless he does something drastically stupid. His personal life, what he does as an individual, I don't think the people of Tamil Nadu care. So I think that part is out of the equation. Now it's all pure politics. And if the alliance partners want to leave out, Congress won't be that stupid, mind you, because Congress knows they can't go back to the DMK. Congress knows they need a foot in the door. Congress won't be that stupid. It will be the VCK or the communists, and even the IUML would not be that stupid. So अगर ये सरकार गिरती है, बहुत ही लो मार्जिन पे गिरेगी, and in any case, Vijay will be the victim. And राहुल गांधी को देखो ना, कांग्रेस को देखो, उनको तो ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया. They are using Vijay stardom to piggyback Rahul Gandhi's prospects for the future. Ki dekho, these are the Gen Z leaders. And they will deploy the same tactics in Karnataka and Telangana in the coming elections. Abhi kitna वहाँ hit hota hai ya nahi, I don't know how much Vijay's popularity is in the Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka. But that is what Congress is doing right now. It wants to project Rahul Gandhi as the Gen Z leader now, using Vijay. Will this help? Because Rahul Gandhi basically looking at कि यार विजय को किसी तरह से last करा लो so that we can go close to the 2029 with a little bit of a stronger game. है कि नहीं? तो वही उसका प्लान है, plan वही है प्लान है ना, वही प्लान है ना, वही But प्लान कितना है, वही प्लान है कि कि 40. will that help? I don't think so. I don't think. I see Vijay and Rahul Gandhi are two very different entities. Vikram or Betal ki tarah Rahul Gandhi's Congress can latch on to Vijay, but it doesn't make them equivalent to Vijay. It doesn't match their stardom. Vijay is a star. I mean, as much as you might disagree with this mandate or how the people have voted, his stardom is big enough to win a state at this point. अब वो DMK, ADMK के against anti-incumbency थी, disgust था, जो था, वोट तो है ना भाई, first time, and even through a digital campaign. But Rahul Gandhi is not Vijay. Congress is not TVK. So if Congress is hoping that they'll go into Lok Sabha with 39 Lok Sabha seats and say that we'll take 10 or 15 and Vijay will take the rest, I don't think he'll agree to such an arrangement. If Vijay understands politics, even 1% he knows on those 39 seats, he can win 39 of them if he runs an excellent government for the next 4 years. Why would he gift it to the Congress on a platter? This deal, the Congress made, and I wrote this. Congress को आज cabinet में भी कोई berth ना मिले, they'll be okay about it as long as they can milk his stardom for the next 4 years until the Lok Sabha elections. Until, and then after what? After that, what? Or at the Lok Sabha elections, what? Break up again? Break up again, find the next regional partner.
Parijivi party for a reason. It changes host. It doesn't change its nature. प्राइम मिनिस्टर मोदी इन बैंगलोर, आज उनका स्टेटमेंट है वहां पर, उन्होंने यही बोला है. हाँ, तो सही बोला ना मैंने, वही उसमें भी I wrote it on my X account that it just reiterates what Modi has been saying all this while. And I was on a panel with Sarvanan, the DMK spokesperson, and I told him, I was like, we used to tell you that they're using you. You never agreed. We used to tell you that for them, the regional partners are just a way to mint more votes. You did not agree. And mind you, the TMC is very hard, DMK is very heartbroken the Yeah. way this whole affair has panned out. They have taken it personally. So personally that DMK spokespersons 1 hour ago, while the swearing in was on, were claiming that MK Stalin was not at the swearing in ceremony, even while being invited through protocol, because Rahul Gandhi was there. They don't even want to come face to face. And DMK's leader, Kanimozi, I think, has already written to the Lok Sabha Yeah, speaker that they want a seating, arrangement to be changed. Now, my question is, we already hear rumors about ADMK splitting. What if ADMK splits, moves to the TVK, a part of it, 2/3 of it? Eventually, what if DMK comes back to the NDA? DMK was a part of the NDA once upon a time. yeah. You never know But how they'll this have to quit politics all will their play. ये द्रविडियन नॉनसेंस इनको बंद करना पड़ेगा. वो उनसे होगा नहीं, पर डीएमके का भी अभी कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है. अब आप देखो ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया. ये दो पैरेलल्स चल रहे हैं, पंजाब में भी और तमिलनाडु में भी. जो वहां द्राविडियन पॉलिटिक्स चलता था, वो पांथिक पॉलिटिक्स करते हैं अकालीस. ना उनका आगे कोई अकेला भविष्य है, ना डीएमके का. एंड बीजेपी हैज नथिंग टू लूज इन बोथ द स्टेट्स बिकॉज़ दे हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग. मैं थोड़ा फ्लिप करता हूँ आपके लिए. डीएमके के अंदर फ्यूचर क्या है? स्टालिन एज हो गया है यार उसका अभी कितना, और यू नो ही कैन प्रोबब्ली बी एक्टिव फॉर another 2-3 years. Fair enough. After that, I mean, I don't hope anything bad against anybody. God bless him with the. No, but you are agreed. Time, the wheel of time moves. Yeah. ठीक है, wheel of time moves. तो उसके पास वो टाइम नहीं है. इसका नेक्स्ट जो है उदयनिधि हैज नो कॉलिंग. तो प्रीटी मच डीएमके का हो गया काम खत्म. And this is exactly what I'm talking about Mamata Banerjee. Mamata Banerjee is what, 76, 78? 71, I think. 71, 72. She's also got health issues. और ममता बनर्जी का जो हेट्रेड है, it's not going to go off in 2-3 years. वो जाएगा नहीं. I agree where you're coming from. So you're right about the age part and the political capital part. But what does DMK have? It has a cadre. It has an ecosystem. Even today, DMK in defeat has a very powerful ecosystem sprawled across the state of Tamil Nadu. Now, I'm not saying the most sensible thing for them would be to come back to the NDA. I don't see it happening. But are you going to tell me that Stalin won't make a last-ditch attempt in the 2029 Lok Sabha elections? We don't know how the state government of TVK also plans out now. Agar 4 saal mein Vijay appears to be such a huge flop that people want a Dravidian party again, what happens then? Right now, every single option is possible. It is possible that Vijay is successful. TVK contests all 39 seats in Lok Sabha. Option number one. That is where DMK becomes very, very weak. BJP is doing what it will do. So अकेले वो दोनों parties कुछ नहीं कर सकती. दूसरा option, Vijay runs a very average kind of a government for the next 4 years, flips, flops, जैसे DKS और सिद्धरामैया का चलता है, इनका भी चलता रहे. People get fed up and they want a stable coalition. That is where Vijay becomes a victim. Again, DMK and BJP are on the losing side of it. 3, Vijay runs a super flop government. He's unable to complete his promises. The charade between the real and the real breaks, and people realize that, there's a difference between electing a politician and an actor. Then DMK would be thinking, okay, who do we go for? And then Congress is not an option. Then BJP is also thinking about its numbers. So you don't know how Tamil Nadu politics will pan out in the next 4 years. But to my mind, I think BJP will, up jaake anomalized game will start. Look, I have one disagreement. If you want to change the game, you have to be in the ground. You can't be in the dugout forever. He contested the Lok Sabha election. He made a good attempt, a fair attempt. Nahi mandate mila, koi baat nahi. Why not contest the assembly? This was a wave election against the Dravidian parties. Why was Annamalai not contesting? If Akhilesh Yadav
a seasoned politician, can contest both assembly and Lok Sabha elections. Why not Annamalai? आप assembly में देखो, you you if you're a part of the assembly, if you're a part of a prominent party with all the backing of the BJP, you are visible. Why is that? People are You blaming the BJP, saying कि इसको सामने नहीं आने देते ये लोग. हाँ, तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, why is he not fighting the assembly election this time? What is the wisdom in staying away and saying I'm away from the storm? You need to be in the storm. You are supposed to be the storm. You're not supposed to be escaping from the storm. You are the one supposed to be unleashing the storm. आप असेंबली में खड़े रहो. मैं कह रहा हूँ आप चाहे सिंगल एमएलए हो बीजेपी के, खड़े तो हो भाई. बाकी लोगों को तो कॉन्फिडेंस दो, कार्डर को तो कुछ कॉन्फिडेंस दो. टुडे व्हाट डज द कार्डर ऑफ तमिलनाडु, द बीजेपी कार्डर हैव टू लुक अप टू? No one. You tell me. Who can they look up in the assembly and say, this is my guy there, he is going to take the party forward next 10, 20 years, 30 years? What do you think the reason is? God knows. This is just something too bizarre for me. So I people mean, blame, most of the people, analysts are blaming the BJP कि भाई उसने वो नहीं दिया है. Or BJP is not given the opportunity to. no, see what happens between now. Annamalai doesn't want to fight or BJP doesn't want him to fight. I don't know. I'm looking at the end result. I'm saying Annamalai had to be there. Now, either of the stakeholders here, if they have made a mistake, they've made a mistake. Doesn't matter who. At the end of the day, it's the loss of the BJP. If BJP loses, Annamalai loses. If Annamalai loses, BJP loses. Interesting. There's a flip side also where people are saying कि भाई the first, and this is something I believed in personally, even I do even now, कि yeah, the first game is to remove this Dravidian nonsense out of. Why can't this it thing. happen simultaneously? It's not. I mean, I stay pretty close to this thing. It's not that easy. नहीं No, होगा no, वो. I'm not saying you get 100 MLAs of the BJP right away in the assembly. No one is making that वो unrealistic chance ही नहीं है. expectation of the BJP. हम्म, हाँ, हम्म, हम कह रहे हैं आप 3, 4, 5 MLAs तो अपने फ्रेम में लाओ. बंगाल में भी तो 3 MLAs से शुरू किया था 10 साल पहले. हम्म. 3 MLAs थे यार 2016 में, 3. And you saw the kind of repercussions it had on the 2019 Lok Sabha election. हम्म. You know, I'm saying just be a part of the table in the casino. Don't sit outside the casino and say, oh, the casino is on a winning streak, the players are losing, I'm away from the storm. Don't do that. Point taken. Okay, fair enough. Let's see if they build up from now or not, or what really happens. ये तो time बताएगा. I want to also ask you about Kerala, which is very interesting. There are 3-4 candidates to become the chief minister. पता नहीं कौन है. KC Venugopal, if he comes this way, जो इनका national leadership है, उसको तो बहुत बुरी तरह झटका लगेगा. Primary advisory board जो है राहुल गांधी का. I think that is where Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi would be in conflict, because Kerala was Priyanka Gandhi's, MP seat, and she has a greater understanding with the people there. So I think वो party में भी disagreement चल रहा है, but that is the hallmark of the Congress. Every single state, they win or the alliance wins, the CM name becomes a crisis of sorts. अभी कर्नाटका का भी crisis दोबारा चालू हो गया, तो ये सब चलेगा. But KC Venugopal, I think I don't see it happening, at least at this point. I think a lot of names are in contention. So let's see how it plays out. अभी तक कुछ नाम ही डिसाइड नहीं हुआ. Yesterday यही जोक चल रहा था कि भैया केरला वाले का तो नाम भी डिसाइड नहीं हुआ, तो गवर्नर वहां क्यों जा रहा है? गवर्नर घूमने जा तमिलनाडु रहा में है यार. कोई नहीं है, घूम के आता हूँ मैं. यहाँ पर भी हाँ, गवर्नर साहब को समझा के तो आता हूँ मैं, जरा कैसे करना है इधर पे. असम का तो हो गया. असम का भी आधा घंटा पहले आ गया हेमंता बिस्वा शर्मा. वो तो So डाउट नहीं that था is यार. one. वो that yesterday people were taking out all body language experts. You know, he's not looking very happy. PM Modi did not. ओ वो यार तो फिर पागल हो गया यार. I mean, वो तो जिसके फिर नाम चाहिए पे रहता साला है ना कुछ. नाच नाच के जिसने इलेक्शन जिताया वही चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा. अबे भाई मेरे, जरा माफ करो मेरे को, ये लॉजिक मेरे अभी दिमाग से विजय बाहर. को लेके भी 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है. एक कह रहे हैं, जैसे मेरे को एक डर रहता है, ही माइट गो टू वॉर विद द सेंटर. ही इन हिज ओपनिंग स्टेटमेंट सेड, आई एम हियर टू स्टार्ट a new chapter in politics. What if he works well with the center? My I only think so he problem, will. but then there is the Congress with him, IUML with him, CPI with him. भाई That वो is where यही my है. doubts stem from. AIADMK का जो आप बोल रहे हो कि 2/3 अगर इधर हाँ, पे स्विच होती हैं, he will हाँ, drop these guys कि भाई ठीक है तुमको नहीं हाँ, करना, जाओ यहाँ से. हाँ. See, So the reason why am I saying this is, यार इसके पास ऑप्शन क्या है?
या तो Hmm. तुम भिड़ो सेंटर से, तो देन यू विल बी अ लल्लू चीफ मिनिस्टर, यू विल नॉट बी Hmm. एबल टू डू जैक शिट। Hmm. आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे पंजाब का वो भगवंत मान, यू विल बिकम दैट, यू नो। And Vijay's, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ही and हैज टू डू दैट। दैट्स व्हाट आई बिलीव, आई मे बी रॉन्ग। no, you are actually correct. And Vijay is also 51 right now. If या he's looking at a sprawling political career and mandates like this, they don't last for 5 years. They last for at least 10. ठीक है ना, ये अगला इलेक्शन और बड़े मैंडेट से जीत कर आएगा. People like stability and his stardom, of course, will only rise if he does the right things. So it is not in his best interest to wage a war against the center. And yes, you're right. If ADMK splits, something happens. You never know how it really works out. But again, where does it leave the BJP in Tamil Nadu? आपने ही बोला ना कि भाई AIADMK का ये कुछ चल रहा है, समथिंग माइट जस्ट हैपन। ओके, सो आई एम But टेकिंग इट फ्रॉम दैट कि भाई अगर hmm, ये स्प्लिट करते हैं, ठीक है, इफ दे स्प्लिट, देन देयर इज अ वेरी क्लियर थिंग। और अगर आपको एक hmm, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट मिल जाती है, फेयर इनफ। cooperative ही चाहिए. Cooperative एक चीज है. Okay, let's look at it other way. Now, again, we are discussing so many permutations with respect to Vijay because we don't know how it will pan out. We don't know. Once sense is he stays there for 10 years and your wheel of time kicks in, both Dravidian parties become obsolete. And then probably Annamalai starts his game. That's also a way. दैट्स व्हाट आई बीन सेइंग फॉर द पास्ट सो मेनी डेज। मेरे को चैनल पे बहुत लोगों ने पूछा है, एंड आई बीन हाँ. सेइंग दैट कि भाई द फर्स्ट टास्क वाज टू रिमूव द द्रविडियनिज्म फ्रॉम देयर। Hmm. ठीक है, इट अब इज, दूसरी यू नो, द गेम ऑफ तमिलनाडु इज टुडे व्हाट द गेम ऑफ बंगाल वाज इन 2011। And he comes under no pressure to follow the Dravidian politics. He's not elected because he can practice a better version of Dravidian politics. So let's not take the optimistic side of things. What if he works well with the center? What if he drops the Congress MLAs or he says, I'm the power center. You want to use me for branding, go ahead and use it. But I'm the one who's going to call the shots. अभी बहुत कुछ होगा. PM will visit eventually. He'll come to Delhi. Protocols कैसा रहता है? How cordial are the meetings? We'll come to know. But if you want to err on the side of optimism, there's a lot to gain for the state of Tamil Nadu. If you err on the side of pessimism, so even then Vijay becomes the victim, and then I don't know. Then the state loses. Vijay doesn't lose. Yeah. So there are, I mean, if he's smart, he should work and he should, ये, but उसका एक चक्कर वही है ना कि is that evangelistic nonsense that will also come across. That is a big चक्कर. तो BJP will have to work with him while kind of weakening him at the back Hmm. end. धीरे धीरे करके उसका जूस निकालना पड़ेगा आपको. And where, अभी पावर स्ट्रक्चर का सिस्टम तो अभी भी डीएमके का रहेगा काफी. yeah, अभी कल yeah. से जो केस चल रहा है कि डीएमके हैज बीन वोटेड आउट so that another government supported indirectly by the DMK can be, sworn in. वो है, I mean, he will have to work this out because अगर इसको कुछ करना है तो he has to हाँ, work that out. Otherwise फायदा नहीं है. And वहां पर it's not sustainable. कांग्रेस का गेम बड़ा टेढ़ा रहेगा. Tushar ji, thank you so Correct. much. This was a very, very good discussion. I think, permutation combination देखना बड़ा interesting रहता है. And Hmm. thanks for the time and, this amazing discussion. अच्छा, just an update to the audience. He also writes on Substack. तो मैंने उनका, blog नीचे description में डाल रखा है. Check it out. And if you like that, please follow that as well. You can see Tushar Saab on various TV channels, and I'm sure, and I hope that he will be a little more regular. हम पहले बात करते थे, उसके बाद things just went viral. उसके बाद wars, this, that, ये, वो. I think now life is kind of settling in, so we will start our conversations again. So I hope this is not the first or the last. And No, thanks once again. thank Audience, you. please like, subscribe, and share this with your friends and families. And of course, support the channel. Check out the description. Join our groups. Namaskar.